So basically, in this case, if we have the, let's start with a simple example actually. Let's say, for example, we define the acceleration as what? Acceleration defined to be the rate of change of velocity. Isn't it? You might have, you can find out the acceleration by looking at the final velocity minus the initial velocity by the time interval. That's what we have studied, means at least in junior classes. V minus u by t, that gives the acceleration, right? Now, if I try to see, at least this is definitely valid if the acceleration was a constant actually. अगर acceleration जो constant होता तब ये definitely valid है, right? Now, let's try to have a geometrical interpretation for this. अब idea क्या है कि अगर हम we assume this is definitely true for a constant acceleration actually. Shall see that in the general scenario, this will actually give us the average acceleration. But if the acceleration is constant, then the average and the instantaneous values, they are the same thing actually. So if I look at this definition and try to construct, for instance, the acceleration time graph, in case we have a uniform acceleration, a constant acceleration, then that will be nothing but a horizontal line parallel to the time axis, isn't it? Because the acceleration is constant, therefore it will simply look like a horizontal line which is parallel to the time axis. This is what happens when we have a uniform or constant acceleration. So I can see if I try to look at a certain time interval t, then this a into t can be thought of as the area of a rectangle, in fact, because a is the height and t is the base. तो ये जो एरिया, ये रेक्टेंगल बना है, इसका जो एरिया है, दैट्स नथिंग बट a into t, right? That means basically that अगर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ मुझे मालूम है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, in that case I can get the change in the velocity actually. You see, this is v minus u, which is a change in the velocity. In fact, जो velocity में increase हुआ है, change हुआ है, उसको find out करने के लिए हम लोग एरिया निकाल सकते हैं under the graph for the acceleration versus time. At least ये तब तो definitely valid है जब acceleration constant है, right? However, as it turns out, this is in general always valid, meaning कि अगर हम लोग acceleration versus time graph के अंडर का एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी भी टाइम इंटरवल में, then that area will actually give us the change in the velocity. तो अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि acceleration versus time का कुछ ग्राफ है, for example like this, again an arbitrary curve, or I just look at the area from 0 to some time t, for example, say for example at this moment, यहाँ तक. So this area is actually going to give us the change in the velocity during that interval of time. उस interval में जो velocity का change होगा, that is given by this area in fact, right? तो यहाँ से हमें एक we have some progress because I can define the area, I can find out the area under the graph for the acceleration time, and what we end up getting is the change in the velocity. So if I knew the initial velocity, for example, so if I knew the initial velocity, if at in this case जो interval of time लिया मैंने वो 0 से लेकर t तक है. So if the initial velocity, if I take that as v naught for instance, then I end up getting the velocity at some later time t by adding this v naught and the change like this. Fine. That means basically in order to obtain the velocity, the instantaneous velocity actually, you not only need the acceleration time graph but also the initial velocity. Fine. If I can find out the area that gives a change in the velocity,
an area of the acceleration time graph we're looking for over there, right? तो यहाँ से हम लोग find out कर सकते हैं जो area निकालेंगे effectively उसके साथ initial velocity add कर देंगे. In that case, I'll end up getting the velocity at any time over there. अभी एरिया कैलकुलेशन तो खैर अगर रेक्टिलिनियर फिगर्स है तो सिंपल है, इजी होगा. लेकिन okay, let's take a specific example that possibly will make it a bit more clear, right? You said one of the questions in the assignment that did have a certain, yeah, question number 3, in fact, let us say. So what we have in this case is, and there's a certain acceleration time graph which has been given to us, and we would like to determine so the acceleration versus right. The acceleration versus time graph looks like this. This is in fact question number 3, so I will just copy it down as well. Statement. So the statement of the question says that there's a car which starts at rest and there. We have a car starts from rest and accelerates as shown in the graph below. Find at what time it would be moving with the greatest velocity and farthest from the starting point. At least in this case, it is not much of a problem because what we are looking for over here is not actually the velocity itself, but at what time it will be the greatest. चलो हम लोग इसमें additional काम ये करेंगे. You would like to find out the velocity time graph as well. So we would like to find out the velocity at certain intervals of time or certain moment of time. For example, suppose I want from this graph of the acceleration time. First of all, a couple of things about this graph, by the way. We notice that in this case, the acceleration is not constant. It increases linearly from 0 to a value of 4 meter per second square during the time interval 0 to 2 seconds. That you can see over here. That point in this case, the acceleration is 4 meter per second square. Subsequently, the acceleration starts to decrease. The height starts becoming less and less, so it's decreasing. And after, just wait a moment. Okay, so yeah, so in this case, can you tell me at what time the object will be moving with the greatest velocity? Sir, at t is equal to 2 seconds. क्यों ऐसा लगता है? Why do you think so? Okay, so your answer is 2 seconds. Anybody else? सर t equals to 2 सेकंड पे तो वेलोसिटी तो +4 मीटर पर सेकंड हो रहा है ना? कितना हो रहा है? +4 मीटर पर सेकंड. फिर हाँ ठीक है, +4 मीटर पर सेकंड हो रहा है.
और बाकी टू से 6 तक तो वो तो नेगेटिव था, तो फिर तो वो तो अप टू 2 सेकंड ही ग्रेटेस्ट होगा ना। बट 2 सेकेंड के बाद नेगेटिव हो गई कैसे, मतलब डिक्रीज कर, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है ना, हाँ, लेकिन है तो पॉजिटिव। मतलब आइडिया क्या है, अगर हम लोग t इक्वल टू 0 पे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, है ना, इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब जैसे जैसे टाइम पार हो रहा है एक्सेलरेशन, अच्छा पहली बात तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो स्टार्ट जिधर भी एक्सेलरेशन होगा उसको उधर ही मूव करना पड़ेगा। इससे दिस केस मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हम लोग जिसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, वहां पे वो स्टार्ट कर रहा है कहीं से, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव in this case motion in one dimension, there are only two possible directions, either one side which is the positive side or the negative side. तो ये प्लस और माइनस सिंपली इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन। अगर हम फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन को चेक करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई फाइंड कि जैसे जैसे टाइम पार हो रहा है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, पॉजिटिव है टिल 2 सेकेंड, उसके बाद अभी भी पॉजिटिव है, 3 सेकेंड पे भी पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड कम है। लेकिन है तो पॉजिटिव है ना, मतलब एक ही सर्टेन डायरेक्शन, तो वेलोसिटी फिर भी इंक्रीज करेगी। as long as the velocity, I mean as long as the acceleration is positive, the velocity keeps on increasing, right? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो रहा है कि उसका जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के पैरेलल बेसिकली, आई मीन से इट्स एक्चुअली पॉइंटिंग इन आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसको कि हम लोग एक्स डायरेक्शन अज्यूम कर रखा है हमने, ये उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉइंट कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। आई मीन वेलोसिटी घटेगा कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटार्ड्स, तब होता है जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होता है, राइट? तब वेलोसिटी डिक्रीज करता है एक्चुअली, बिकॉज बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, इसका मतलब कि इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना? एम आई क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस, नो? Basically, in this situation at 2 seconds, the acceleration is greatest, not the velocity. The velocity will be increasing after that as well, though it will be increasing at a smaller rate. जैसे हम लोग अगर 2 सेकेंड के जस्ट बाद देखेंगे तो एक्सेलरेशन थोड़ा कम हो गया 4 से, लेकिन है अभी भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि अभी भी वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, बट जिस रेट से इंक्रीज हो रहा था वेलोसिटी वो थोड़ा घट गया बेसिकली। द रेट हैज गॉन डाउन but the velocity still increases, right? Similarly, it continues till 4 second. 4 second पे हम नोटिस करते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ, तो 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट करे। उससे पहले वो डिक्रीज नहीं कर रहा था, उससे पहले वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रहा था। उसके बाद 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी डिक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, मतलब नाउ द एक्सेलरेशन पॉइंटिंग दिस वे, opposite to what velocity is actually pointing. And for that reason, now it happens that the velocity starts to decrease, in fact. ठीक है? इस वजह से जो greatest velocity है, that is actually attained at t equal to 4 second, in fact. Fine. तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि we know that the change in the velocity is the area under the graph. अभी भी मैंने ये बताया था कि जो एरिया होता है अंडर द ग्राफ फॉर द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, that actually gives the change in the velocity, right? The velocity में change हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग t इक्वल टू 1 सेकेंड तक एरिया फाइंड आउट करते हैं, ये वाला एरिया, that will tell me what is the change in the velocity in the first 1 second, right?
but because the object is starting from rest से start कर रहा है, इसलिए जो change होगा वही final velocity भी होगा, है ना? Whatever the change, that is the final velocity. जिसके वजह से अगर हम लोग इस एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं, that gives us the velocity at 1 second in fact. So that is nothing but half into base into height. Base is 1, height is 2. So I end up getting 1 meter per second. So at the end of 1 second moving with 1 meter per second velocity. If I look at say for example 2 second, 2 second में अगर शुरू से 0 to 2 second हम देखते हैं, जो भी इंक्रीमेंट होगा वेलोसिटी में, that will be this whole area. ये पूरा एरिया निकालेंगे तो that will give us the increase in the velocity from 0 to 2 second in that interval, right? अब ये जो velocity है, that's again half into 2 into 4, it is 4 meter per second. अच्छा, इसके बाद अगर हम एरिया फाइंड करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ तक एरिया निकालना चाहते हैं, 3 सेकंड पे क्या हो रहा है? डेफिनेटली ये एरिया तो पहले से ज्यादा आएगा ना। अगर हम 0 से लेकर 3 तक का एरिया फाइंड आउट करते हैं, तब एरिया ज्यादा आएगा पहले से। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है अभी भी, बिकॉज द वेलोसिटी इज नथिंग बट इन दिस केस बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इसलिए अभी जो वेलोसिटी है वो सिंपली एरिया, आई मीन इज सिंपली द फाइनल वेलोसिटी एज वेल, आई मीन से द चेंज इन द वेलोसिटी एज वेल। जो भी चेंज होगा वेलोसिटी में वही यहाँ पे वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि इनिशियल 0, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे राइटवर्ड्स मूव कर रहे हैं टाइम में, तो एरिया तो एडअप होता जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा तो बढ़ ही रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एरिया इंक्लूड करना पड़ रहा है, इस कारण से वो बढ़ रहा है वेलोसिटी। बट दैट हैपेंस टिल वी रीच 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद वो ग्राफ नेगेटिव हो गया। आइडिया ये है कि व्हेन वी कंसीडर द एरिया कैलकुलेशन, आई एम एक्चुअली लुकिंग एट समथिंग कॉल्ड अ साइंड एरिया। तो मैं जो देख रहा हूँ वो एक्चुअली मैं साइंड एरिया के बारे में देख रहा हूँ, नॉट द एब्सोल्यूट एरिया बट द साइंड। अब साइंड का मतलब हो रहा है कि अगर एक्सिस के नीचे चला गया वो, दिस मस्ट बी टेकन टू बी द नेगेटिव एरिया इनका, तब जाके चीजें कंसिस्टेंट होती हैं इनका। So effectively signed area means that I'm going to take anything which is below the t-axis as a negative area. तो इस इंटरप्रिटेशन को अगर हम लोग ध्यान में देते हैं, then I find कि जैसे 4 सेकंड से ज्यादा समय होता है, for example this, then I'll have to add a negative area. Now, if I wanted the velocity at 5 seconds, then I'll have to compute the area all the way from 0 to 5 seconds. Okay? बट 0 to 5 सेकंड में करने के लिए करते हैं तो फिर क्या हो रहा है कि ये जो नेगेटिव एरिया है वो बेसिकली न्यूमेरिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एरिया तो कम होने लगा। 4 सेकंड के बाद एरिया स्टार्ट डिक्रीजिंग, देयरफॉर आफ्टर 4 सेकंड द वेलोसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग एज वेल, मीनिंग दैट द पार्टिकल वुड बी मूविंग विद द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी एट इक्वल 4 सेकंड। 4 सेकंड पे उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, राइट? इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। सर ओके, ठीक है। मतलब अगर नहीं बोलना है then you can just use some emojis that are available, you know, in the below pan over there. Okay, so हाँ सर एक और डाउट है। बोलो बोलो, अभी मेरी बात वो- खत्म नहीं, बट फिर बोलो तो। वो पोजीशन टाइम ग्राफ से है। पहले वाले था। हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ से जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, उसका सेकंड पार्ट। 10 नंबर क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर। ठीक है, उसको करते पहले इस वाले को फिनिश कर ले, थोड़ा सा काम बाकी है इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन तो खैर इतना ही था कि हमें फिगर आउट करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है। सेकेंड पार्ट का क्या आंसर लगता है? फारदेस्ट कब होगा स्टार्टिंग पॉइंट से? What do you think about it? Where will be farthest from the starting point? The answers? So 4.
4 सेकंड पे 4 सेकंड पे फारदेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 4 सेकंड Sir, पे T is तो equal to 8 second. व्हाट 8 सेकंड 8 second. 8 सेकंड 4 सेकंड पे सब तरह से एक्चुअली फारदेस्ट नहीं हो, तो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी पे ट्रैवल कर रहा है। इसके बाद तो आइडिया क्या है कि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो गया, बट वो अभी उल्टा थोड़ी जाएगा, क्योंकि उसके पास तो आई मीन द एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव भी हो गया, फॉर एग्जांपल इधर में 4 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के पास तो एक्चुअली में कुछ वेलोसिटी पहले ही आ चुका था ना, यस सर। तो वो पहले डिक्रीज होगा ना, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, लेकिन अभी मूव तो उधर ही कर रहा है, इधर इधर ओके इधर मूव कर रहा था, वेलोसिटी डिक्रीज में स्टार्ट किया, स्टिल अभी भी उधर मूव कर रहा है, तो अभी जाएगा तो उधर ही, डिस्टेंस तो बढ़ता ही सर रहेगा। हम लोग मोमेंटम को भी वो इसमें देख रहे हैं। क्या क्या मोमेंटम? ये तो मोमेंटम हो गया ना सर। नहीं, मोमेंटम क्यों होगा? मोमेंटम तो है ऑब्जेक्ट के पास डेफिनेटली, बट वी नॉट राइट नाउ नॉट टॉकिंग अबाउट मोमेंटम। आइडिया इज सिंपली ये है कि जो वेलोसिटी आई मीन एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब कि वेलोसिटी अब डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, बट अगर वो पहले रेस्ट पे होता और एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो वेलोसिटी उधर ही इंक्रीज करेगा जिधर में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, बट यहाँ पहले मूव कर रहा था, लाइक यू नो थ्रो समथिंग अप ओवर देयर, उसका वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे है, तो उसका स्पीड घटने लगता है, लेकिन ऊपर तो जाता है ना। हाँ सर। ऐसा नहीं कि जैसे हमने उसको ऊपर फेंका और सीधा नीचे जाने लगता है, ऐसा तो नहीं होता। हाँ। उससे नीचे जाने के लिए पहले उसको रेस्ट पे आना पड़ेगा, उसको अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन की किसी की सिचुएशन में इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होना है, उस केस में फिर पहले उसको रेस्ट पे आना पड़ेगा, है ना। इस वजह से भी यहाँ पे एक्चुअली वेलोसिटी जीरो कब होगा? 8 सेकंड पे जीरो होगा। क्यों होगा जीरो 8 सेकंड पे? क्योंकि टोटल एरिया जीरो हो जाएगा, जो अपर ट्रायंगल एरिया है ये वाला पार्ट, और ये लोअर एरिया जो ये पोर्शन है, इन दोनों का एरिया मैग्नीट्यूड में बराबर है, बट आई सेड कि नीचे वाला एरिया को नेगेटिव लेना पड़ेगा, जिसके वजह से व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज कि 8 सेकंड के एंड पे उसका जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो जाएगा। तब तक वो मूव कर रहा था और एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा था, उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हुआ। इस वजह से इट विल एक्चुअली बी फारदेस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट 8 सेकंड एक्चुअली, जो उसका एंड है ना ये यहाँ पे 8 सेकंड, तब वो सबसे दूर होगा ओरिजिन से स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। क्योंकि तब तक उसका वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में रहा। ये अलग बात है कि पहले बढ़ा फिर घटा, लेकिन एक ही डायरेक्शन था, तो नेगेटिव कभी नहीं हुआ वेलोसिटी। इसके वजह से 8 सेकंड पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा एक्चुअली, ओके सर। राइट। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कवर किया यहाँ तक वो ये है कि इफ वी डिटरमाइन द साइंड एरिया, बेसिकली writing signed area, under the graph of acceleration versus time. Gives the change in the velocity. Gives a change. Change is the important word. इसको हम skip नहीं कर सकते. So it gives a change in the velocity, not the velocity itself. Combined with the initial velocity, I'll be able to find out the सर incident. हाँ बोलो ना। सर चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं हो गया? नहीं, change in velocity by time acceleration होता है। सर रेट ऑफ चेंज। हाँ, रेट ऑफ चेंज वो होता है एक्सेलरेशन, ये तो सिर्फ चेंज की बात कर रहे हैं, ओके ठीक है। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये तब भी वर्क करेगा जब एक्सेलरेशन नॉन लीनियर है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब भी काम करेगा, कांस्टेंट है तो काम करेगा ही नहीं, कांस्टेंट तब भी काम करेगा, ठीक है। अच्छा, जस्ट टू
आई मीन जैसे ये पिछले वाले प्रॉब्लम में अगर हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ तो मुझे वेलोसिटी के लिए बस पूछा था कि कहाँ पर ग्रेटेस्ट है, बट सपोज करते हैं मुझे पता करना है कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी क्या है, हाउ इज द वेलोसिटी वैरिंग विद टाइम। यहाँ भी वेलोसिटी ऐसा नहीं कि कांस्टेंट रहे, क्योंकि एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी तो खैर कांस्टेंट होगा ही, तो बढ़ेगा। पहले बढ़ता हुआ 2 सेकेंड पे 4 सेकेंड पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा, फिर उसके बाद इट विल डिक्रीज, become zero finally at 8. How do you figure out in this case the acceleration, I mean the velocity versus time graph? इससे पहले ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके okay, we can still tackle it up. The important thing remains same. We would like to find the area under the graph, है ना? एरिया निकालना चाहते हैं, लेकिन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए मुझे, तो इस कारण से सर हाँ सर मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। कैसे आया? नहीं, किस तरह का ग्राफ है, कैन एक्सप्लेन? हाँ सर, पहले एक मिनट से दिखा रहा है। सर ऐसा है, ओके फाइन, ठीक है, बट एंड में थोड़ा गड़बड़ है। एंड में सर ये ऊपर नहीं जाएगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा ऐसे पैरेलल करके। भी नहीं होगा, ये गो सर डाउन टू जीरो, जीरो तक चला जाएगा। अच्छा सर। क्यों जीरो होगा? अभी कम से कि 8 सेकंड बाद अगर इसका वेलोसिटी देखोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी जीरो होगा, राइट? कंसीडर आफ्टर 8 सेकंड द वेलोसिटी इज जीरो इन फैक्ट। सर मतलब ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा। हाँ, बेल की तरह, एक घंटी की तरह। जो तुम्हारा लेफ्ट वार्ड पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट ठीक सिमेट्रिकल होगा उसमें, अच्छा सर। जैसे लेफ्ट एज इफ कि हमने बीच में मिरर रख दिया, लेफ्ट राइट को फ्लिप कर रहे हैं, इस केस में ऐसा ही होगा। ठीक है। अब ये क्यों तुम्हें ऐसा लगा कि इस तरह ग्राफ होगा? क्या सर? आई मीन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इस तरह का ग्राफ होगा? सर क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्राफ पैराबोलिक होगा। ये पैराबोलिक तो खैर इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन लीनियर है, नहीं? अगर एक्सेलरेशन मतलब कि खुद ही पैराबोलिक होता तो वेलोसिटी थोड़ी पैराबोलिक हो पाता था, isn't it? बट ठीक है, तुम्हारा आर्गुमेंट सही है। Effectively, in this case, if I wish to determine the velocity time graph, we can actually do it analytically for each portion. Idea बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब अगर हम लोग let's bring that from here. That put that fresh image. वापस उसी ग्राफ पे चलते हैं ना। Let's see. I said we would like to, in this case, determine the acceleration time graph. Sorry, the velocity time graph. Velocity versus time हमें फाइंड आउट करना है किस तरह का होगा। अगर if we do not want it to be exact, then we could see a few things. मुझे पता है कि भाई 0 से 2 सेकंड तक, इनफैक्ट 0 से 4 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ता ही रहा है, बट पॉइंट ये है कि वो सेम रेट से नहीं बढ़ा है। देखो कि शुरू में नोटिस करो कि जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि
रेट ऑफ चेंज अगर इंक्रीज करेगा तो जब फास्टर बढ़ेगा, इंक्रीजिंग मच फास्टर होगा। जैसे जैसे रेट ज्यादा होता जा रहा है तो उसका इंक्रीज करने का रेट बढ़ रहा है बस। लेकिन 2 सेकंड के बाद वो रेट कम होने लगेगा, रेट स्टार्ट गोइंग डाउन। सो ये बढ़ेगा बट स्लोली बढ़ेगा। 4 सेकंड तक वो बहुत ही स्लो हो जाएगा बढ़ना है, फिर वो घटना स्टार्ट करेगा। Well, let us try to find out in this case the exact thing, right? देखो यहाँ पे distinctly कुछ cases हैं। We could see in this case कि यहाँ पे एक जो इंटरवल है 0 से 2 में सिमिलर बिहेवियर है। 0 से लेकर 2 सेकंड तक का बिहेवियर सिंपल मतलब सेम है। एक्चुअली वहां पे एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। That's a similar behavior all through from 0 to 2. हम एक काम करते हैं, सपोज आई कंसिडर टाइम मोमेंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू सम टी। ये एक आर्बिट्री टाइम है जो मैंने लिया है 0 और 2 सेकंड के बीच में। 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में इस टाइम को मैंने लिया, राइट। अब इस टाइम तक अगर मुझे एरिया को फाइंड आउट कर लें टिल दैट पर्टिकुलर टाइम, देन आई नो कि दिस इज गोइंग टू गिव अस द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। बट क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इट दिस एरिया आल्सो गिव्स अस द वेलोसिटी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, राइट। तो इस ट्रायंगल का एरिया मुझे फाइंड करना है जिसका बेस t है। हाइट कितना होगा, व्हाट अबाउट द हाइट ब्रदर, व्हाट डू यू थिंक? इफ द बेस इज t, how much will be the height for this particular triangle, the blue triangle? क्या लगता है, जब बेस t है तो हाइट कितना होगा? सर पहले उस एंगल को थीटा मान के कर सकते हैं क्या? tan थीटा पहले कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। नहीं तो सिमिलैरिटी यूज कर लेते हैं। ये एक बड़ा ट्रायंगल, ये वाला जो दिस ट्रायंगल दैट वी हैव, ये हाइट और ये बेस, ये ट्रायंगल अगर हम लेते हैं दिस ट्रायंगल ओवर देयर और ये ट्रायंगल जो बड़ा ट्रायंगल, ये तो सिमिलर ट्रायंगल है ना, सिमिलर टू ईच अदर। सो आई कैन सिंपली यूज सिमिलैरिटी। जैसे यहाँ पे बड़े ट्रायंगल में ये 4 है और ये 2 है, तो बड़े ट्रायंगल में 4/2 एक्चुअली उसका स्लोप है, तो ये छोटे ट्रायंगल में जो स्लोप आएगा सेम ही आना चाहिए। तो बेस तो t है, तो ये हाइट कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है। दैट हाइट इज समथिंग 2t एक्चुअली। That's something I'm looking for, the height over there in that particular triangle. हाइट कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, है ना। So therefore I know the height and so I can obtain the area. That area which will give us the velocity itself, क्योंकि इनिशियल 0 है इसके वजह से, अदरवाइज मुझे इंक्रीमेंट मिलता, चेंज मिलता। So that is turning out to be half into base into the height which is 2t. तो इसका मतलब कि Vx का फॉर्मूला यहाँ पे t स्क्वायर आ रहा है। As long as t lies between 0 and 2, I can find velocity by squaring. For example, t equal to 1 सेकंड पे अगर देखेंगे तो उसका वेलोसिटी आएगा 1 मीटर पर सेकंड, जो हम लोग को मिला था पहले, हम कंप्यूट किया था यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड उस इंटरवल। और अगर 2 सेकंड तक कर रहे तो 4 मीटर पर सेकंड था, जो यहाँ से भी आएगा। t के वैल्यू अगर 2 पुट कर देंगे तो 4 मिल जाएगा, है ना। दिस फॉर्मूला देयरफॉर इज वैलिड टिल 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद का क्या डिफरेंस होगा? फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि वी कंसिडर टाइम का वैल्यू ले रहे हैं इधर में, मतलब यहाँ तक अब t मैंने ले लिया। नाउ द वैल्यू ऑफ t आई एम गोइंग टू टेक, जैसा कि ग्राफ है, तो t अब इधर में कहीं पे है, ये t स्टार्टिंग से एक्चुअली, t is all from the beginning. So what I'm going to have in this case is this area which I'm trying to find out.
ये एरिया। अब ये जो एरिया होगा वो कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हमारे पास एक ट्राइंगल है 2 सेकेंड तक, जहां तक उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू 4, हाफ इंटू 2 इंटू 4। वो एक ट्राइंगल निकल आया। और ये एक्स्ट्रा एक एरिया है, ये एक्स्ट्रा एरिया क्या होगा? ट्रापीजियम होगा एक्चुअली, दैट एक्स्ट्रा एरिया, राइट? इस एक्स्ट्रा एरिया का एक्स्ट्रा एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हाफ इंटू सम ऑफ, चलो हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मैग्नीफाई। So how we find out in this case the area of the trapezium, because this area I know, the first area, the triangle one, this triangle that we have, that area is known to us. This is 4. What about this trapezium? Trapezium की area कैसे निकालेंगे हम? सर ट्रापेजियम एरिया का फॉर्मूला लगा के हाँ तो बताओ क्या है? Find area of trapezium, ये जो छोटा half into sum of parallel side into distance between them. फाइन, तो सम पैरेलल साइड्स क्या होगा? यहाँ पे तो ये हाइट तो मुझे पता है, ये साइड तो 4 है ना? The bigger side that we have, this over here, that is 4 that I can see. What about the smaller height brother? Smaller side कितना होगा? कैसे पता करें? सर वहां पर फिर से सर सिमिलर ट्रायंगल्स या फिर थीटा पकड़ के काट सकते हैं। Fine, you can do that. Can you determine the area of this trapezium? Trapezium का area find करके बताओ। तो इससे velocities interval निकल आएगा। यहाँ velocity formula half into सर 2t² -8 आ रहा है, 2t square, -8। मतलब ये इस trapezium के एरिया। हाँ सर। अच्छा देखते हैं, हाफ इंटू प्लस ये जो हाइट होगा, बेसिकली यहाँ पे सिमिलरिटी अगेन यूज कर सकते हैं। तो ये जो बेस है वो है 4, मीन 2 एक्चुअली। अगेन ये 4/2 should be the height by ये टोटल लेंथ है 2 वहां से। अच्छा ये टोटल लेंथ यहाँ तक 4 है, 4 - 2, तो 4 - 2। तो बेसिकली ऑल फ्रॉम 0 से लेके यहाँ तक अगर जाएंगे तो 4 है लेंथ टाइम में, और यहाँ से यहाँ तक तो t है, तो ये एक्स्ट्रा जो हो गया वो 4 - t हो गया। 4 - 4 - t निकल आया, तो हाइट h by 4 - t शुड बी 4/2। तो यहाँ से h निकल रहा है 2 टाइम्स 4 - t, है ना? तो ये दूसरा साइड हो गया 2 into 4 - t एंड इनटू हाइट, मतलब ये जो ट्रापेजियम का हाइट है, इनफैक्ट दैट्स नथिंग बट t - 2। ये उस ट्रापेजियम के एरिया हुआ। मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है उसका एरिया 4 है, तो मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। लेट अस सी हाउ मच इट सिंप्लीफाइज टू बी। यहाँ से हम लोग 2 निकाले, दोनों तरफ से बाहर चला गया, so that 2 is gone out, cancels out, what remains is 1 + 4 plus remaining is 5 - t into t - 2 plus 4. As you could see, at equal to 2 we get 4 over there, equal to ठीक है। So इस case you could open the bracket. In this case I'm going to get a quadratic, 5 to get 10, -10 plus 6, how much we do? E square
Oh, sorry, I made a mistake there. Because I can only take 4 t minus, sorry, 4 minus t minus 5 into t minus. So we end up getting 7t minus t square and minus 6. I hope that is correct. Equal to input करेंगे तो 14 minus 10 is 4. That's right. Equal to 4 put करने पर 3 minus 10. But I put t equal to 4. I should get 0 in this case. So t equal to 4 plus करेंगे तो 4 minus 6. 16 minus 6 is 20. 92. So it's not cancelling. I have made a mistake somewhere, it seems. Let us see. 2 plus height is 2 into 4 minus 3. The base is t minus 2. And then plus a triangle. So that is fine so far. t equal to 4 put करने पे तो मुझे एक्चुअली में हाफ into 4 into 8 मिलना चाहिए था, तो मिल रहा है 28 और ये हो जाएगा 622 मिल रहा है. What is the mistake? Check and find a mistake in this case. 2 is gone. 1 plus 4 minus 3 is 5 minus 3. Minus 2 plus 4. 4 minus 3 minus 5. 3 minus 2. So t square minus 70 plus 10. Like, it's still same. So I get 70 minus t square and minus 10 plus 4 is minus 6. So seems to be okay. Equal to, we are getting correct result. 4 minus 6 minus 10 and 70 is 14. That's plus 5 plus 5. And I want t equal to 4. I put t equal to 4, I should get half into the base into, okay, I should get 8 actually. Half into the base is 4, height is 4. 8. So if I put in this case t equal to 4, 28 minus, I'm not getting it. Getting 6. Wrong. What mistake have we done? Put equal to 4. The medium simply becomes time. Oh, sorry. This actually, the mistake lies over here. This is not 2 by the way, this is 4. So the change I have to do is over here. The height is 4, not 2. Very wrong. Wrote it down wrongly in fact. 4 actually it is. So we end up getting instead of 5, each gone with 6. Then it should be correct. 6. So that puts us 8 and 12. So now we are getting 3 minus 2 squares. This is what you got on your side. है ना? इस बार करेक्ट आएगा. t को अगर हम 2 पुट करेंगे तो आई एम गेटिंग इन दिस केस 16 minus 8
is 8 minus is correct, and at equal to 4 if I plug, I'm going to get 32 minus 16 minus 8, 24. Yeah, that's right. 8. I mean, this is therefore the required velocity time as long as t lies between 0 to 4 actually, right? और इसके बाद क्या होगा अगर हम फॉर एग्जांपल टाइम को 4 से ज्यादा लेकिन actually we could just proceed but just for the I mean say you should notice कि जो motion है वो बहुत symmetrical है जो चीज इधर हो रहा है similar चीज यहाँ पे भी है so I could actually avoid but then the formulas must be different so if I just wanted the graph I could just still plot but if I want the exact function then I'll have to compute further right I have to still further compute but let us say for example that we don't want the computation right now I simply wanted to look at how the velocity varies over there. This was the acceleration. So what I find is that if I consider these two, there are a few things again. Now, when you have a quadratic in time, by the way, the graph is something called a parabola. Fine. You must have studied about quadratic expressions in class 10. You keep in mind that whenever we consider the a quadratic expression, the graph is always a parabolic shape actually. And if the coefficient of t square is positive, as it is over here, then the parabola is opening upwards. It opens up. While if it is negative, like in this case, then it opens downwards actually. Right? If you just keep that thing in mind, we can in this case draw the graph for the velocity versus time the following way. I could first what we get in this case if I try plotting for the first 4 seconds 8 I mean 2 4 6 and 8 if I consider the first 2 seconds we already know the graph is basically this part t square okay so that means therefore that it's a parabolic shape so it just goes up like at t equal to 2 the velocity is 4 so this will have to give us 4 at this point like this this opens up effectively it's a curve which opens upward like this but then after t 2 seconds we actually get a parabola which is opening downwards okay? And we have also seen that t equal to 4 seconds the velocity has become 8 in fact so that will be basically the double and because it is downward opening parabola the shape goes like this it just curves this fast afterwards we can because the graph is symmetrical for the acceleration, it will be also similar for the velocity, symmetrical as well. So as a result, instead of actually computing, we could simply extend it in a very symmetrical way, drawing a mirror image like this, and then it just goes down to 0 during like this. That is how the velocity time graph look like in this.
Now the point is that proceeding in a similar fashion, if I wanted the area under the graph for the velocity versus time. Now, what have we just seen is that for the acceleration versus time, if you find out the area for the acceleration versus time, you actually end up getting the change in the velocity, right? What about the area under the graph for the velocity versus time? We already seen that, or at least we know that. The area under the graph for the velocity versus time will give us the displacement, right? That we already know about that. In any case, but just note the point that the area under the graph of velocity versus time gives the displacement time. Okay, that gives you displacement. Okay. Again, in this case, you could see the problem already right there, because had the graph for the velocity versus time be, or it had been, for example, a straight line, finding the area would have been simpler. But in this case, as we encounter it, the area under the, I mean, say, how do you find out the area under the graph for the velocity time in this case? Because the area is curved over there. And that poses a problem, in fact, right? I mean, because we do not know how to actually find out the area under the curve figures over there. This brings us to another problem that we have. That is the computation of area under curves, not a straight line, but curve. But before we go over this one, let's take a simpler case. I mean, definitely area finding is going to be a problem when we have, for example, a velocity time graph like this. Now, how exactly I find out the area under this graph? It would be difficult, right? Before we actually tackle the problem, we just take a more simpler situation. Okay, before that, however, I remember that I think somebody, Roishike, I think you asked a question, isn't it? From the first assignment, question number 10, right? Let's first tackle that one, then we can just come back and continue with this, because this will take a bit long time over. So let's first consider what you are actually asking, and that was the question number 10 of the position time graph, right? Okay, so here's the question entirely. I just copy it. Here's the whole question. We have been given the motion of a particle along the x-axis. Draw the velocity time graph for the following position time graph. That should be simple enough, I believe. Now that you do know that Aishiki यही है ना question. हाँ सर इसका फर्स्ट वाला Second वाला हो नहीं, गया first था, वाला सेकंड हो गया वाला ना? नहीं हुआ. Okay. The second question is to find out the value of t if the average velocity for the time interval 0 to t is equal to the instantaneous velocity at 7.5 seconds from the start of the motion. 7.5 second from the start, मतलब ये वाला time यहाँ पर. तो इस time
पे जो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है वो तो बेसिकली इस लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि दैट लाइन इज अ टैंजेंट टू दिस कर्व एज वेल। यहाँ पे जो टैंजेंट लाइन और एक्चुअल कर्व तो एक ही है। So if I find out the slope of that line between 7 and 8 seconds, that should give us the over here. So okay, I've read it entirely by the way. Anyway, सबसे पहले तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते हैं 7.5 सेकंड आफ्टर स्टार्ट मोशन, मतलब कि इस मोमेंट पे, इस इंस्टेंट पे। तो वहां पे मुझे इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए होगा। उसका स्लोप क्या है? Sir, 2 हाँ, it will be height is 2 units and the base is 1, so just indeed that's correct. तो इसका स्लोप 2 है ना? अभी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ग्राफिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन is nothing but 2 meters positive, so that is having a positive slope, and the magnitude is nothing but 2, right? Okay, now the point is हमें अच्छा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी जो होता है ग्राफिकली कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग को उस इंटरवल के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और उस कॉर्ड का स्लोप निकालना है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो होना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड। तो जो कॉर्ड होगा उसका स्लोप 2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। मतलब इन इफेक्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ कॉर्ड through the beginning to this point parallel to this chord. इस पैरेलल इस लाइन बाय दिस ये तो एक्चुअली में अभी टैंजेंट की तरह भी सोच सकते हैं। मुझे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि स्टार्ट करेगा शुरू से, यहाँ से वो जहाँ पे भी कट करेगा इस ग्राफ को, वही रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ टाइम होगा। am I clear enough on this? मैंने बोला कि what I have to do over there is I have to draw a line parallel to this line, and if I could simply this line is what I need here. तो अगर हम इसको मूव कराते हैं origin से इधर से, what I've done over here is I have effectively drawn in this case a line which is parallel to the line over here, ये वाला। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन बनाया जो कि 4 से पास कर रहा है इनफैक्ट। तो मुझे पता करना है कि वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है इस कर्व को वापस। तो हमारा रेलेवेंट टी जो रिक्वायर्ड टाइम है वो तो ये मोमेंट होगा, दिस वन, दिस इज द मोमेंट आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? सर हम पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में तो कॉर्ड का लेंथ कॉर्ड का चाहिए, स्लोप मतलब चाहिए ना, कॉर्ड तो का स्लोप स्लोप तो चाहिए यही ना। होगा ना, जो कि स्लोप क्या डिनोट करता है? एक लाइन के लिए स्लोप क्या इंडिकेट करता है कि वो कितने एंगल पे जा रहा है ना? अब जो स्लोप चाहिए मुझे, स्लोप जो होता है व्हाट वी नो इज कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ एन इंटरवल। फिर एक इंटरवल के एंड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो उसका जो कॉर्ड होगा उसका स्लोप क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी।
ये स्लोप ऑफ कॉर्ड। ऑन द अदर हैंड स्लोप ऑफ टैंजेंट से क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। That gives us the instantaneous velocity. ठीक है। सो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे जो 7.5 सेकंड का मोमेंट है, जो ये वाला इंटरवल यहाँ पे है, ये इस टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या होगा? वो इस लाइन का स्लोप होगा, इस लाइन का, राइट? वो लाइन का स्लोप हम निकाल लिया 2। तो जो, और ये हमें पता है कि जो हमें एक ऐसा टाइम चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी वही होगा जो कि इस 7.5 सेकंड पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो है। तो इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो मैं ऐसा एक कॉर्ड चाहता हूँ जिसका स्लोप 2 मीटर पर सेकंड, और जिसके पैरेलल दो लाइंस का स्लोप अगर सेम होता है तो पैरेलल होता है। इसलिए मैंने क्या किया कि इसके पैरेलल एक लाइन बनाया है जो कि शुरू से टी इक्वल 0 पे पास करता है, टी इक्वल 0 के थ्रू पास करता है, वो ये लाइन है। दिस इज अ लाइन, राइट? मुझे पता करना है कि वो किस टाइम पे वापस कट करता है इस ग्राफ को। जो भी होगा वही हमारा रिक्वायर्ड टाइम है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि अगर 0 से लेकर टी के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, इस मोमेंट और इस टाइम के बीच का एवरेज वेलोसिटी, तो उसके लिए मुझे इस इंटरवल का बिगिनिंग और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, उसका कॉर्ड निकालना है, स्लोप निकालना है। तो यही कॉर्ड है वो बेसिकली। इसका स्लोप तो 2 आएगा, क्योंकि मैं पहले से इंश्योर कर रहा हूँ कि इसका स्लोप 2 है, isn't it? For that reason, in this case, this is a required chord, and therefore I can find a time. Time कैसे figure out करेंगे? How to find out this time? Any idea? सर इसका भी स्लोप अगर इक्वल्स टू 2 कर दे फिर क्या फाइंड कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका स्लोप 2 मुझे पता है, और ये पता है कि 0,4 से पास कर रहा है, तो वैसे इसका इक्वेशन मुझे मालूम है इसमें। I mean पोजीशन टाइम ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं। एक्चुअली आइडिया होगा कि फॉर इंस्टेंस मुझे पता है कि ये जो टाइम है, हाँ देखो, हम थोड़ा इस पर ज्योमेट्री से कर सकते हैं। What I need is this particular time, isn't it? That's what I'm looking for. ये लेंथ मुझे चाहिए t, same as this t here. और इस लाइन का स्लोप मुझे पता है कि 2 है, स्लोप इज 2, राइट? और ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है? ये जो डाउनवर्ड स्लांटिंग लाइन, उसका क्या स्लोप है? Anyone? -5। Basically ये 10 और -5, yeah that's correct, -5, उसका स्लोप है -5 इन फैक्ट। ओके, तो प्रॉब्लम है कि मुझे ये इंटरवल नहीं पता है। नहीं, आई डू नॉट नो दिस इंटरवल। I want to find out this t. I know that if this is t, then this height over here will be 2t, that I know, क्योंकि उसका स्लोप 2 है एक्चुअली। तो इस हाइट का, ये जो हाइट यहाँ तक होगा 2t हो जाएगा, और यहाँ तक ऑलरेडी 4 है, तो टोटल हाइट 4 + 2t हो गया, isn't it? Okay, we can still utilize a bit of similarity in this case to get that particular. See, देखो यहाँ पे एक सोल्यूशन ये है कि हम लोग इस ग्रीन वाला लाइन की इक्वेशन निकाल लें। I mean in class 10th you
did have the simultaneous equation which you obtained solution by graphically drawing the lines, isn't it? Class 10 में था ये. Anyway, even if you do not know, line के equation निकाल सकते हैं by using a point and a slope that we know. Is it known or it's not known? सभी को पता है क्या? लाइन के इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं. At least similarity is known to us, that much we know. Similarity तो पता है मुझे, है ना? Okay. So just follow me basically. I said कि ये जो लेंथ है ये t है, और क्योंकि इस ग्रीन लाइन का स्लोप 2 है एक्चुअली, स्लोप इज 2, इस वजह से ये जो हाइट होगा, दिस हाइट विल बी 2t because the slope double, है ना? So if I consider दिस हाइट यहाँ तक, ये वाला हाइट अगर निकालते हैं, ये हाइट, तो वो कितना हो जाएगा? 2t में 2 ऐड करना पड़ेगा, प्लस 2t प्लस 2, राइट? इसंट इट? तो 2t ये लेंथ हो गया, ये जो रेड वाला मार्क किया है वो लेंथ, और एक्स्ट्रा जो है यहाँ तक वो 2 है. तो टोटल हाइट मैं बेसिकली इस वाले ट्रायंगल को देख रहा हूँ, यहाँ से लेके ये राइट ट्रायंगल, उसका स्लोप मुझे मालूम है 5 है, -5 बराबर. डाउनवर्ड स्लैंटिंग इसलिए नेगेटिव है, अदरवाइज न्यूमेरिकली वो +5 होगा बेसिकली. So far it is clear. I mean, ये जो लेंथ होगा यहाँ पे वो 4 - t है एक्चुअली, क्योंकि टोटल लेंथ 4 है यहाँ तक और ये लेंथ t है, तो दैट्स 4 - t. तो अब उस राइट ट्रायंगल में पता है कि हाइट अपॉन बेस जो होगा वो 5 होगा. What we know in this case is height 2t plus 2 upon the base, which is 4 - t, must be 5. Height by base we know इस पे कि एक्चुअली में वो डिक्रीज कर रहा है, तो अगर हाइट लेंगे तो आई मीन इफ यू जस्ट कंसीडर स्लोप इज नेगेटिव बिकॉज स्लैंटिंग डाउनवर्ड डिक्रीज कर रहा है, बट मैंने बस लेंथ लिया है, तो लेंथ वाइज तो 5 होना चाहिए स्लोप, है ना? तो अब इस यहाँ से t के लिए सॉल्व कर लेते हैं. 2t प्लस 2 इक्वल टू 20 माइनस 5t, ये हो जाएगा 70 इक्वल टू 18 rather 70 18, तो t के वैल्यू निकल गया 18/7 सेकेंड. दिस इज व्हाट वी हैव, 18/7 सेकेंड, जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि 0 से इस टाइम तक के लिए जो एवरेज वेलोसिटी आएगा वो वही होगा जो कि 7.5 सेकेंड का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हिच इज 2 मीटर पर सेकेंड. इज इट ओके? हाँ सर. नो प्रॉब्लम, बिलीव. Hopefully that's fine enough. So coming back, I mean, this is nothing but an exercise in geometry, by the simple singular triangle. That's it. Just let me switch on the lights. Second, hold on. Okay. Yeah. So I was saying that
In effect, it is just a bit of geometry that we can utilize because there are piecewise straight lines, so geometry is not very difficult in fact. तो मुश्किल तब होता है जब ये कर्व लाइंस होते हैं, बट अभी तक कर्व लाइन नहीं है, इस कारण से कोई इशू नहीं. Coming back to what we are saying earlier, हमने last time we just talked कि जो area है under the graph for velocity versus time that gives a displacement. Let's try to utilize this idea combined with the previous one, like what we did for the acceleration, and try to obtain the a special case effectively. A special case is that of uniform acceleration. That is much simpler compared to what we could have if we do not have a uniform acceleration, but a non-uniform one. We already have an example. जो ओरिजिनल पहला ग्राफ हमने देखा था वहाँ पे देखा कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, वहाँ पे वेलोसिटी खुद ही एक नॉन यूनिफॉर्म कर्व आ रहा है. अब इसके अंडर का अगर एरिया फाइंड करना होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा तो थोड़ा मुश्किल काम, इसको थोड़ी देर बाद लेते हैं. जस्ट टेक इट अ बिट लेटर. Before that, we just consider the special situation which happens when things are moving with uniform acceleration. That's especially important or especially useful to us actually, कि बहुत सारे केसेस में हम लोग को सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही मिलेगा, मे बी पीस वाइज यूनिफॉर्म बट नेवरदलेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात है. सो इफ आई केस ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके बाद हम लोग we go back and look at the situation where we have non-uniform acceleration, then what we can do. Okay, for the time being we can just consider the situation. I'm going to as usual assume that the motion is taking place along the x-axis, which I'm going to call as well, the motion happens on a line which I'm going to call as the x-axis actually. Okay, so उस केस में if I start by plotting the graph for the acceleration versus time, this case you must have already done by this. The graph in this case would be like what? Because uniform acceleration time graph क्या होगा? Simply एक even nothing but a straight line, isn't it? Horizontal line parallel to t axis. That's what the graph looks like when we consider a uniform acceleration. So let's that value I'm going to take as a. A in this case is scalar. It can be actually positive, but it can be negative as well. It can be zero as well. But fact is a constant value. Okay, which भी हो सकता है positive and negative, but constant हो. Okay. Subsequently, if I wanted to look at the change in the, if I just find out the area under the graph up till some time t, I know this is going to give us the change in the velocity. Isn't it? Plus the velocity change in this case. This is our delta, right? So if the initial velocity is taken to be, let's consider it as V naught. V naught is the initial velocity. Then at time t, the later time, the velocity can be obtained Vx can be written down as V naught plus change in the velocity. Now, what is the change? Because simply a rectangle, the change is nothing but a into t.
Therefore, we could write on V naught plus 80. This is a very similar, familiar result that we must have seen. This is similar to V equal to U plus 80 equation. The same equation, I'm just using different variables or different symbols, that's it. Otherwise, simply V equal to U plus 80 equation that we have. That's my first equation. Right. Now, we shall look at the variation for the velocity. अगर इस velocity versus time का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा होगा? अगर इस velocity को plot किया जाए t के against, what do you think will be the velocity time graph look like? कैसा दिखाई देगा velocity time graph इस case में? Anyone? This is a familiar case. I believe you should be knowing this. क्या लगता है? How will the graph for the velocity versus time look like in this case? V versus t. Sir, straight line. Straight line which is going to be inclined at some angle, isn't it? Slope उसका a है, initial velocity v naught है, so it is a line which is like हाँ स्वामी कुछ बोला तुमने? No, sir. Fine. That is how the graph analysis look like. Still a straight line graph, linear graph. So that is why it is important, because this helps in finding the area easily, actually, right? So I would like to find the. I'm interested in finding a displacement next, and for that case, I know that I need to determine the area of this graph till some time t. If I just obtain the area under the graph till some time t, what I end up getting is nothing but the displacement. The displacement will be simply this area that we have over there, the trapezium. So in this case, this displacement should give us, I mean, this area should give us a displacement. How do we find out the area over here? The displacement it is displacement. How do you figure out the displacement or the area basically? It's a trapezium, so I could do half into some of parallel sides, half into some of the parallel sides. So one parallel side is v naught, the other one is just the velocity vx at some time t, and into the height t over there. This is what we have. Now I know this is the graph of this equation over there. So Vx will be, because this is the equation that this graph is representing, तो किसी भी टाइम t पे जो भी हाइट होगा इस ग्राफ का वो Vx होगा, और हाइट हम इसे फॉर्मूले से निकालेंगे एक्चुअली. तो क्या हो जाएगा, दैट विल गिव अस इन दिस केस Vx के बदले हम लोग वही पुराना फॉर्मूला 1 पुट कर लेंगे. तो आई गेट V नॉट प्लस AT into t. Okay. So that gives us in this case, opening the bracket, I end up getting again a familiar looking formula, V naught t plus half AT square. This therefore becomes a displacement in case the acceleration is constant, right? Obviously, if I wanted the position of the object, then I need to know the initial position actually. Just to finish it up, if initial position is denoted as x naught is the initial position, some fixed value, then the final position can be obtained
final position, which I'm going to call simply as x at some later time t, can be written down as x equal to the initial position plus a displacement, which is nothing but v naught t plus half at square. There. This becomes therefore the position of an object whenever it travels with a uniform acceleration. Keep in mind the fact that whenever an object travels with a uniform acceleration, its position time graph is always a quadratic in this case. And the general form can be written down in this manner. So if I could write down the position as a function of time in this way, I could read out, I could see what the values of the acceleration, the velocity, initial and the initial position are actually, right? For example, if I consider, if say for example, x is given by x2 plus 3t minus t square, for instance, then by comparison, I could see that this is actually of this kind, which implies this object must be undergoing a uniform acceleration, right? And that uniform acceleration can be obtained from this equation by comparing. We can compare. I can compare with the previous one. Comparing, we find that our x naught must be 2 meters, assuming SI units. Initial position is 2 meters. Initial velocity is 3 meters per second. And the acceleration a should be basically minus 2 meters per second square, because half a must be minus 1 in this case. If I compare, in half a must be minus 1, so a becomes minus 2 meters per second square, right? As always be sure, always keep this in mind whenever you see, जब भी हमें पोजीशन टाइम ग्राफ क्वाड्रेटिक दिखता है, इसका मतलब साफ है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट, okay? Or constant acceleration, well, it's going to be one of the important cases that we have. एक और इक्वेशन है जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, the third equation that we again are familiar with. अगर हम फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इक्वेशन 1 को लिखते हैं vx minus v naught, 1 can be written down as vx minus v naught equal to 80. ये एक इक्वेशन हुआ. At the same time, if you look at this equation over here, ये जो equation यहाँ, displacement which is delta x is half of v naught plus vx into t. तो इस equation को थोड़ा modify करके हम लिख सकते हैं. मतलब हमारे पास since to write on this manner, vx plus v naught and vx plus v naught I'm writing from this equation. This one must be delta x. This entire thing is delta x. So v naught plus vx, this is in fact delta x. So v naught यहाँ से हम लिख सकते हैं, for example, v naught plus vx is equal to 2 delta x by t. तो ये चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं. This becomes 2 delta x by t. Now we could just multiply these two equations. Multiply कर दें. Multiply. So multiplying is what I get. I get vx square a plus b into a minus b. That is a square minus b square. And t cancel हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा twice a into delta x. This becomes therefore our third equation, which I just rewrite down as vx square equal to v naught square plus twice a into delta x. This is the third equation that we have. Again, these are familiar to us. V equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus twice s. वैसा equation. Only different thing now what we are dealing with is the fact that now this a v naught
displacement, they may be positive or negative. In those equations earlier, जिन्हें क्लासेस में s जो था डिस्टेंस था तो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, राइट? ये तीसरा इक्वेशन हमारा है, and these three equations are basically equations we're working quite a lot over there, and in this case we deduce them by just using the area interpretation of various parameters. Area under the graph for the acceleration time gives us the velocity change. Area under the graph for the velocity versus time gives the displacement and so on, right? We shall see in a while what happens if the area is non-linear by then. But before that, again, we try to utilize these equations in a few sample situations. So one important situation where acceleration constant है. There's one situation where the acceleration is constant. That is when, for example, you throw something and it moves freely under the effect of Earth. Gravitation के within, gravitation के effect से influence में सिर्फ move करता है एक object अगर, तो मुझे पता है कि उसका जो acceleration है वो हमेशा constant होता है, isn't it? And that constant is around 9.8 meter per second square, right? So if you consider, for example, throwing a stone, I hope that is clear enough what I said. सर हाँ, सर यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स बाई टी कहाँ से आया एक बार दिखा सकते हैं आप? हाँ, ये इधर से आया, ये जो इक्वेशन था पिछला वाला, ये ठीक है डिस्प्लेसमेंट सर, है ना, हाँ यहाँ सर समझ टू गया। से क्रॉस मल्टीप्लाई टाइम से डिवाइड कर दिया, वहीं से है. So I was saying that motion under gravity basically yes, before that we just take up a certain numerical question which might be just a minute. Let's find out a question. For the case of uniform acceleration. Okay. Syntax. A numerical example. Let's take a couple of numerical examples before we proceed ahead. There is this example that we have. First of all, yeah. So this question says that there's a nucleus of a helium atom, which we refer to as the alpha particle actually, travels along the inside of a straight hollow tube, 2 meter long, forms a part of a particle accelerator. That doesn't concern us right now. If one assumes a uniform acceleration, how long is a particle in the tube if it enters at a speed of 1000 meters per second? Should have just write on 1000 meter per second, that's it. Meters per second is consider just meter per second.
and leaves at 9,000 meter per second. And what is the acceleration during this interval? I'd like to do this problem. Applying the equations we've just seen, there are many ways that you could do this question. What do you think is the time interval and can just apply, because we already know the distance over which it moves, 2 meters. This is the displacement as well. Uniform acceleration, displacement is known. Initial and final velocities are known. You have to find out the time interval. So how much will that be by the way? Anyone has done it yet? Not a very difficult. हाँ सर I हो गया cannot understand the question. Like, what is the meaning of particle accelerator? Oh, it doesn't concern us so many. Basically, particle accelerator is something which accelerates charged particles. Okay, doesn't matter for us. What is important is that this particle, which is an alpha particle, it travels along the inside of a straight hollow tube, which is 2 meters. The relevant information to us. Everything else is the other things that it forms a part of a particle accelerator. Just an extra piece of information which we are not considering yet, right? What is important is inside of a straight hollow tube which is 2 meter long. That's what is important thing. सर हाँ सर हो गया क्या क्या है आंसर बताओ. सर एक्सेलरेशन आया 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम आया 4 × 10⁻⁻⁴ सेकंड. ओके दैट्स फाइन. टाइम हो जाएगा 400 microsecond. To okay, acceleration is basically 2 to 10 power 7 meter per second square. isn't it? ठीक है, that's fine. समझ लिया, अभी समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. अब कर लो, अब बता दो. We can basically use this equation directly over there, over here, this part. I can use this equation. Delta displacement is nothing but V0 plus Vx into T by 2. So from there we can find a time. The same equation can be utilized because the time interval can be obtained from there.
you know the displacement to be 2 meter, 2.0 meter technically speaking, but and then Vx is the final velocity, which is known to be 9,000. Well, the initial is 1,000 meter per second. That makes it 4 into 4 by 10,000, giving us 4 into 10 raised power minus 4 seconds, which is basically 400 microseconds. That's the time it spends within the tube. And once we know this time, we can definitely find out the acceleration, assuming a uniform acceleration. For uniform acceleration, we can therefore, this is the first part, A. B part, we could just consider the acceleration. Use the first equation, you can utilize V equal to U plus AT or Vx equal to V naught plus AT. And finally, the acceleration as Vx minus V naught by the time interval. That gives us, in this case, 9,000 minus 1,000. You could also utilize the original data. You could have obtained the acceleration by using V square, Vx square equal to V naught square plus 2a delta. This part you could have done. I mean, because V finally is known, initially is known, displacement is known, everything is known. But in this case, much easier to do it in a sense, because in this case, there's no quadratic coming up. I could utilize this equation itself, 4 into 10 power minus 4. So that makes it 9 minus 1 is 8 by 4. Numerator is 10 power 3 by 10 power minus 4, giving us 2 into 10 power minus 7. Will be meter per second square, right? This is therefore the acceleration of the alpha particle, assuming a uniform acceleration. Okay. This is सर मैंने पहले sorry, सर मैंने plus पहले m by the way. एक्सीलरेशन निकल लिया था ओ एक्सप्रेशन पहले फाइंड कर लिया, मतलब पहले वो हाँ इक्वेशन यूज करते हैं, काफी टाइम चलेगा, दैट्स फाइन. Plus 7 by not minus 7, so plus 7. This seems to be a very large acceleration, by the way. It's like 2 10 power 20 million meter basically for every second the speed changes by 2 10 power 7 meter per second. Seems like a quite large acceleration. हमारे लिए काफी large है, but particles के respect में standard acceleration actually. 200 million, 20 million meters per second per second. Seems like a large value, but it's not. Okay. I was saying that if we consider a case of a uniform acceleration, a special case when I leave a body to move freely near the Earth's surface, only under the action of gravity, is known to move with a uniform acceleration, which is called the acceleration due to gravity, right? Acceleration to gravity का जो numerical value है, that is around 9.8 meter per second square for particles or points near the Earth actually. Acceleration due to gravity. जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू g, मतलब इसको सिंबॉलिकली g से डिनोट करते हैं, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 मीटर per second square near the Earth's surface. That's what the value is. Point ये है कि we can, whenever an object is therefore thrown upwards or downwards, and it moves only under the influence of the Earth, neglecting the air resistance, then उसका acceleration एक constant value होता है. So we can apply all the relevant equations for
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सारे के सारे इक्वेशन अप्लाई किए जा सकते हैं. Now, in those equation as we know, ए जो है वो स्केलर क्वांटिटी, इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. एग्जैक्टली कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे ये बात डिपेंड करेगा कि हम लोग का रेफरेंस डायरेक्शन कौन सा है. If you choose, for example, if you decide to say, consider the upward direction to be positive, for example, अगर हम ऐसा करते हैं कि upward direction को positive choose कर लेते हैं, फिर तो जो भी quantities नीचे की तरफ point करेंगे वो सब negative होंगे. If I choose my upward direction as, let's consider x-axis itself, ये हमारा x-axis है for time being, the positive x-axis over there. इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ग्रेविटी इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, द acceleration due to gravity is pointing downwards. In this case, the acceleration will become negative. So if I throw something, for example, from the ground level and throw it upwards, assuming the initial velocity is v naught, the relevant equations हैं थोड़ा बहुत चेंज हो जाएंगे. हम लोग को a के बदले -g पुट करना पड़ेगा. So I could write down after a while the velocity will become nothing but v naught minus gt after time t. I could find out the displacement upward direction as v naught t minus half gt square because I'm taking the upward direction as positive. अगर किसी ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चूज कर लिया है तो उसके लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, है ना. कीप दैट इन माइंड. यहाँ पे ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ उसमें मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है, जिसलिए इसके वजह से जो भी क्वांटिटीज नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव है. अदरवाइज इफ समबडी चूजेस डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, और किसी ने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है तो उसके लिए तो जी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा एक्चुअली, राइट. कीप दैट थिंग इन माइंड व्हाइल यू राइट डाउन द इक्वेशंस एक्चुअली हमेशा. And finally we get vx square equal to v naught square minus 2g 2g delta x. यहाँ पे अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो डेल्टा एक्स डेफिनेटली कोइंसाइड कर रहा है हाइट से. इनफैक्ट तो हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं. इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हाइट से कंपेयर कर सकते हैं. रिमेंबर हाउएवर कि हाइट यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब इस लेवल पे नीचे चला जाए तो हाइट नेगेटिव होगा, फाइन. इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तब इक्वेशंस को हम रीराइट कर सकते हैं इन द फॉलोइंग फैशन लाइक दिस. बट कीप इन माइंड दैट इन दीज इक्वेशंस h दो चीजें हैं. एक तो सारे कुछ क्वांटिटी जो भी हैं वो सब स्केलर क्वांटिटी हैं. vx हो गया, g हो गया, h हो गया, सारे के सारे स्केलर हैं. इट कुड बी नेगेटिव एज वेल बेसिकली, आई मीन टू से. दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमारा अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, ठीक है. whenever you try to remember a formula, also keep in what context they are applicable. Otherwise, sometimes some assumptions might be changed and then this formula is no longer applicable. Okay. So let us see an example application of this part over there. Okay, let us consider in this case that we throw a ball vertically upward from the ground with a speed which is 80 feet per second. Okay. Normally for the case, or if we just take the acceleration g, when things in feet per second, then the acceleration due to gravity is actually 32 feet per second square actually. Okay. I mean, there's not much trouble with these conversions. They're rather simple over there. Let us see. Say, for example, we throw an object from the ground level, from the ground upwards, with a velocity of 80 feet per second. So I'm just writing this g data over here itself. In feet per second, if it is, it's 32 feet per second square. Okay. Not very difficult to
convert it, but just keep this in mind in value because this value is useful. So I'm saying that a stone is projected or thrown upwards with a velocity of 80 feet per second. The first question to find out is how long it takes to reach its highest point and how high the ball rises. Please, it should be not very difficult to deal with. सर 100 फीट होगा सेकंड वाला. सेकंड वाला 100 फीट होगा, सही बात है, दैट्स करेक्ट. 10 समय में रीच कर रहा है. सर टाइम 2.5 सेकंड. Yes, that's correct. 2.5 seconds. हाँ सर हो गया. सर Okay. हो गया. Okay, fine. So relatively easy question seems. सभी का हो गए? लेफ्ट आउट. हाँ सर हो गया. This should be simple enough because highest point पे जब भी पहुंचेगा उसका velocity 0 हो जाएगा, so I can utilize the first equation itself. 0 equal to v naught minus gt. So v naught is 80, g is 32, so we get time as 80 by 32. That makes it 5 by 2, which is 2.5 seconds, isn't it? And how high it rises, we can apply the third equation. Finally, the velocity becomes 0. So we must have 0 equal to v naught square 80 square minus 2gh. That gives h as 100 feet, right? Okay, that's great. Next, so the question, this one says that there's a balloon which is ascending at a, this I can just take a snapshot, screenshot. Expression.
A balloon is ascending at a rate of 12 meter per second at a height of 80 meter above the ground when a package is dropped from the balloon. How long does it take the package to reach the ground? What do you think about this? In this case, we have to take g as in meter per second square actually. Yes, we can this question. I'll just come back and drinking some water over this time.
सर सर अराउंड 5.4 आएगा। सर मेरा लगभग 4.2 आ रहा है। लगभग 4.2, सर 5.4 अराउंड। 5.2 बोल रहे हो? सर 5.2 सर 5.2 5.2। सर हाँ सर आंसर क्या सर आंसर क्या 5.4 आएगा? मेरा भी 5.2 5.7 सबका 5 पॉइंट। अच्छा, एक मिनट रुको, चेक देखते हैं हाउ मच इट इज गोइंग टू बी। सॉल्व एनी क्वेश्चन। सर मेरा टोटल 5.4 आ रहा है। 5.4 सेकंड आ रहा है। 5.4। हाँ सर 5.4 आ रहा है। अच्छा, तो ये हो जाएगा। देख लेता हूँ रुको जी। So that success. ये 5.4 के अराउंड है। 5.4 5.4466 सेकंड के अराउंड है। 5.2 नहीं आएगा, 5.4 के अराउंड आएगा। 5.4466 अराउंड। हम तुम्हारा 5.2 आ रहा तूने बोला। हाँ सर। कैसे? तो मेरा भी आया। कैसे? सर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.8 लेंगे हाँ, तो 9.8। फिर 5। अच्छा, तो फिर 5.4 आ रहा है। तो पहले क्या 10 लिया था? हाँ हाँ सर। सर हमने लिया था। ये 9.8 लेने पे आ गए। सर मैं भी 10 लेके किया पर सर मेरा 5.4 के अराउंड आ रहा है। 10 10 लेके करेंगे तो भी टेन ले करेंगे तब भी 5.4 ही आएगा। 5.37 अराउंड एक्चुअली। अगर हम 10 लेके करेंगे तो 5.37 अराउंड आएगा एक्चुअली। मतलब फिर भी 5.4 5.2 नहीं आने वाला। Can you find out in this case the basically I could obtain this solve this problem by using the fact that once it has reached the ground, you can just put the position to be 0, the final position to be 0, isn't it? Basically, when it is 80 meters above, the balloon was ascending. balloon है weather balloon की तरह। that was ascending at a rate which is 12 meter per second। और यहाँ से पैकेज को ड्रॉप कर दिया गया।
So we need to find out. Actually, can you find out what is the maximum height from the ground which the package attains actually? Sir, 87. Sir, 80 plus, sir, 80 plus 720 by 87.2. 98. Okay, fine. तो बेसिकली ये पैकेज जो है पहले थोड़ा ऊपर जाएगा तो उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है जिस मोमेंट पे ड्रॉप हुआ इट आल्सो गॉट द सेम वेलोसिटी व्हिच दैट इज ऑफ द balloon actually, so it first go up and then goes down actually, isn't it? First go up like this and then comes down. That's fine. So it will give I mean, you can actually we can find out the time it takes by directly, but is not considering this part of the motion where it is going up, in fact, because I could simply, in this case, put our, you can see that as it goes from here, if I take the upward direction as positive over there, and G is negative, and the displacement is this, so displacement is also negative, in fact. I can just put in this case, I can just use the fact that displacement is minus 80 meters. The initial velocity is plus 12 meter per second because it was upwards, and the acceleration is minus g in this particular case. And we could use the second equation. Therefore, I get minus 80 equal to 12 into t minus half ut square. That gives a quadratic in t, and we just use the fact that this gives us g t square. Taking everything on the left side, so I get minus 24 t minus 160. Or you could simply take g as, if you wish, you can take it as 10 or approximately 9.8. Anyone, I could just take it up. Let's work with 10, so it simplifies the calculation a bit over there. You can take g approximately as 10. That gives us minus 80 is 12t minus 5t square, giving us 5t square minus 12t minus 80 equal to 0. That gives a time as can apply this either Acharya formula. B square minus 4ac comes plus 4 into ac, that is 20 into 80 is 1600. Right there. We get 12 plus minus root over of 1744, in fact. Need to approximate a bit. By 10. So I'm looking for root 1744. 40 square is 1600. 41 square is how much by the 1681. 42 square will be, but I need to compute the square root seems, or you can just use a calculator. It will be possibly easier for us, right? They'll give us two values, isn't it? How do you discard the second value by them? Why do you discard the second value? Is it because simply Sir, because negative? why do they give negative value? It doesn't that negative number have some significance? Yes, 41.76 approximately. If I consider this around 41.76, right?
40. Obviously, we take the negative number, you're getting a negative root. What is the, I mean, doesn't have, can't that negative number have any significance over there? What do you think? No significance at all? सर टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना? वो तो बात है, टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता डेफिनेटली, लेकिन क्या उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? एक रूट जो आ रहा है वो अराउंड -2.97 आ रहा है, अराउंड 3 सेकेंड आ रहा है एक रूट, और जब प्लस साइन लेंगे तो तुम लोगों ने बोला 12 प्लस 41.76 5.4 सेकेंड का रहा है। एक जो है वो -3 सेकेंड के अराउंड आ रहा है और एक है 5.4 सेकेंड का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक काम करते हैं, सपोज करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग ऊपर थ्रो करने के बजाय अगर 12 मीटर पर सेकंड से नीचे थ्रो करते तो क्या कितने समय में ग्राउंड पे पहुंचते? कैन टेल मी दैट? इनफैक्ट हम कंप्यूट कर लेते हैं। अगर हम थ्रो करते नीचे की तरफ, इफ थ्रोन डाउन with 12 meter per second, उस केस में displacement would have been, I mean, in this case, sticking to the same coordinate axis that we had earlier, we'll have the initial velocity also as negative. तो सारा इक्वेशन हमारे पास फिर ऐसा हो जाएगा, मतलब 5t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें एक जो रूट होगा, इफ आई कंप्यूट इन दिस केस b स्क्वायर माइनस 4ac, जो सेकंड पार्ट अभी भी सेम ही रहेगा। इसमें अगर हम कंप्यूट करते हैं जो एक पॉजिटिव रूट मिलेगा एक्चुअली इस केस में, रूट ओवर ऑफ 1744 माइनस 12, ये जो पॉजिटिव रूट आ रहा है वो पिछले वाले का नेगेटिव रूट के बराबर। जिस पिछले बार लास्ट टाइम पे जो नेगेटिव रूट आया था वो अराउंड -2.98 के अराउंड था सेकेंड, यही चीज अभी भी आ रहा है लेकिन इस बार पॉजिटिव आ रहा है 2.98 सेकेंड के अराउंड, इस बार पॉजिटिव आ रहा है। तो एक्चुअली में आइडिया ये है कि जो इस बार हमने जब थ्रो किया था अपवर्ड, डेफिनेटली मुझे टाइम का जो वैल्यू मिला था एक नेगेटिव आ रहा था, बट आइडिया ये कि अगर इस मोशन को रिवर्स कर रहे हो ना, और बेसिकली इफ आई हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो करते हैं और यहाँ पे जब आएगा 12 मीटर, या फिर बेसिकली वहां से नीचे फेंकेंगे 12 मीटर पर सेकंड से, तो एक्चुअली उसको एक्चुअली उतना ही टाइम लगेगा जो कि पिछले बार वो नेगेटिव टाइम आया था। इट्स लाइक कंटिन्यूएशन ऑफ द मोशन इन फैक्ट। कन्वर्सली ऐसे भी सोच सकते हैं कि जितने स्पीड से ग्राउंड को हिट कर रहा है एक्चुअली, अगर उसी स्पीड से मैं उसे प्रोजेक्ट करता है ग्राउंड लेवल से, तो यहाँ तक आने में उसे 2.8 सेकंड लग जाता है, 98 सेकंड लगता है। So obviously this number is negative, so it has at least no bearing in this problem, but does have some consequence, some significance in fact. ठीक है, इस बात पर ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, but anyway, that's what I have. Okay, let's go back to the situation. I mean, इसके और भी questions मैं तुम लोग को भेज दूंगा for a timing. However, we take a look at a particular situation. We remember we said that, I mean, how to find the area if the graphs were non-linear by the way. तो एरिया कैसे निकाला जाएगा, वो क्वेश्चन है। सर इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन करके, दैट इज द आइडिया, टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन एक्चुअली। एग्जांपल देखते हैं, सपोज करते हैं कि वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया
एक्चुअली एरिया प्रॉब्लम एरिया कैलकुलेशन क्यों कर रहा है? सपोज करते हैं मेरे पास वेलोसिटी दिया हुआ, अब वेलोसिटी के अंडर का वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है उसके अंडर एरिया अगर कंप्यूट करेंगे तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकलता है ना? स्ट्रेट लाइन ग्राफ में तो खैर आसान है, लेकिन what if the graph were curved? Say for example, my task is to basically determine the area under a graph, which is say for example a quadratic curve, या फिर एक आर्बिट्री कर्व लेते हैं. सपोज करते हैं कि कोई भी एक आर्बिट्री कर्व ले लेते हैं. Suppose that this is the velocity versus time and this graph is something like say like this for example, and I'm interested in finding out the displacement from 0 to some time t over here. यहाँ तक का मुझे displacement चाहिए. We know that the area under the graph for the velocity time gives a displacement. Problem over here is that this is not a piecewise curve. This is exactly not a piecewise graph actually. It's actually a curved graph. So how do we find the area? That causes a bit of problem in fact. हम लोग कुछ approximation कर सकते थे. We might have, we could break it up into small intervals. हम लोग क्या कर सकते थे कि इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरवल ऑफ टाइम को, और उस इंटरवल में हम लोग इस ग्राफ को सपोजिटली स्ट्रेट लाइन मान सकते थे. We could have taken the graphs in between each of these time intervals as straight lines. For example, ये पोर्शन में हम एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं, इसमें स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट. इस केस में we have to just compute the area of the trapezium circle. So that could be done. Though it will not be exactly the area I'm looking for, but still it will be quite close actually. Okay. However, एक दूसरा जो रिलेटिवली आसान तरीका होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसको ट्रापीजियम में तो नहीं, रेक्टेंगल में ब्रेक कर लेते हैं. कहने मतलब ये है कि जो ब्लू कर्व है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्मूथ वेरिएशन, हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टेप्स में ब्रेक करते हैं, लाइक अ स्टेयर केस. तो स्टेयर केस में ब्रेक कर देते हैं यहाँ से. तो जस्ट ब्रेक इट अप इन स्टेयर केसेस लाइक दीज. ओके, इस तरीके से. और इन स्टेयर केसेस के अंडर के एरिया निकालते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल्स बना हुआ है तो इट विल बी स्टिल इजियर टू कंप्यूट द एरिया, राइट. ये रेक्टेंगल है फॉर एग्जांपल, इसका एरिया हम कंप्यूट कर सकते हैं इजीली, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सॉरी, बेस इनटू हाइट. उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल है, उसके लिए भी बेस इनटू हाइट कर सकते हैं. तीसरा रेक्टेंगल है, उसके लिए बेस इनटू हाइट कर सकते हैं, एंड सो ऑन. So I can do it for all these rectangles. But as you could see, this will not give us the actual area because थोड़ा कुछ एरिया हमने मिस किया. इनफैक्ट we have missed, for example, I see that we, अगर हम इस पर्टिकुलर पोर्शन में देखते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल कर्व ऐसे जा रहा था और हमने उसे ब्रेकअप किया है इस तरीके के रेक्टेंगल में. इधर मैं एरिया लिया है मैंने, नीचे वाला पार्ट लिया, बट आई डिड नॉट कंसिडर दिस पोर्शन. इसमें एरर आएगा, है ना. So what can be done actually is we see in fact that अगर हम इसको और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, if I further subdivide this interval, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीच में एक और सब इंटरवल हम लेके आते हैं, इनफैक्ट ये इतना पोर्शन है उसमें और भी पार्टिकल आ तो और छोटा हो जाता है इंटरवल, तो उस केस में मुझे ये एरिया इंक्लूड हो जाएगा. नाउ व्हेन वी ऐड अप द रेक्टेंगल्स देन दिस एरिया विल बी इंक्लूडेड, बट स्टिल वी हैव सम एरिया लेफ्ट आउट. ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, बट हम ये देख रहे हैं कि जो एरर है वो रिड्यूस कर, एरर इज रिड्यूसिंग इन फैक्ट, राइट. तो आइडिया ये है कि अगर हम लोग इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, व्हाट वी कैन डू इज आई कैन कीप ऑन डिवाइडिंग द एंटायर रीजन इनटू some intervals and we can take the intervals width very small. मतलब यहाँ पे जितने इंटरवल्स हैं, n इंटरवल्स जिसमें डिवाइड किया है, इस n इन n इंटरवल्स को आई मेक n very large, n towards infinity.
infinity. उस case में, in that limiting situation, we find that the areas of these rectangles, the sum of the areas of the rectangles, will actually be equal to the actual curve. है ना? The actual area can be obtained as a limiting value of the sum of the areas of these rectangles when the number of rectangles has increased indefinitely. Okay. जब वो काम करेंगे तो हमें एक्चुअल एरिया निकलेगा इनका, फाइन. ये जो प्रोसेस है पूरा, to find out the area by dividing into large number of rectangles and then looking at what happens to that area as n becomes infinitely large. इस प्रोसेस को डेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है. This is referred to as a definite integral, right? However, और इसको लिखते कैसे? What we should actually be writing down over here is the actual area. In this case, if I try to see the actual area over there, it will be written down in this fashion. It will be written as 0 to t into vx dt integral. That is how I write it down. Vx is basically the function which you are integrating. T is the, so this is the function, or you can say the integrand over there. That is the integrand. This t is the variable of integration. Variable of integration. This 0 and t are the limits between which we are evaluating, and this sign, this whisker sign, is basically a sign of the integration, right? That is the entire thing. We'll have to compute something called the integration of the velocity with respect to time. Then we shall end up getting the displacement, the area actually, right? However, the process is a bit tedious. Process है वो काफी tedious है in fact. In fact, it turns out कि I can just show you by the way a series of how exactly look like over there. For instance, if I consider a very simple example, instead of actually doing it over there, this series of, oh great, that's just wait a moment. So for instance, if I do this same process, like in this particular scenario, what we're trying to do is trying to find out the area under the graph of y equal to x square. I'm going to say in this case, instead of taking t as the independent variable, I have taken the independent variable is x and the dependent variable is y. So this is y equal to x square, the graph, which is actually a parabola, as we've just been saying, quadratic. This is the red curve that we have been shown over here, this particular curve. I was trying to estimate the area, find out the area under this graph, and we are trying to approximate it by dividing it into a series of rectangles, the entire interval. In this case, there are 10 intervals that we have done and obtained the areas of these rectangles. The height of these rectangles at every point is actually the height of the function value at these points over there, which I can see that in this case I have divided into 10 parts over there. So each part is 1/10. This interval is basically 1/10 actually. So 0.1 effective, right? So 0.1, 0.2, 0.3, 4,
0.5, 0.6, 0.7, 8, 0.9, and 1. In this case, the second diagram, which is below actually, okay, in this case, I'll explain. In this case, there are two rectangles which have been taken, by the way. In this one, in the first upper diagram, the rectangle which has been given is actually, we have taken the upper value. I have taken at in each of the intervals the greater value of the function to find out the height. While over here, the below, we have taken the lesser value, implies the left hand action. So you can see that in this case, I have missed some areas. In this case, I have taken more area actually, right? In this case, it shows situation for n equal to 30. So I have in this case divided into 30 intervals. Lower part में नीचे वाला area है, upper part में ऊपर वाला area है. So upper part is slightly more, the lower graph is slightly less. You can see that as the number of n increases, there's hardly any difference between these two values. For n equal to 50, I see that the difference is very, very small in fact, right? This difference will keep on reducing as n becomes more and more in fact. In limiting situation, when n tends to infinity, the difference will be simply gone, and what we actually end up getting is the actual limit. Okay. But as I said, the process is very, very complicated over there. So the idea is to, have, and you also notice by the way that the values of the areas, in this case, I'm getting the last situation, is around 0.3434. This is 0.3234 actually. The actual area is 1/3, which is 0.33 recurring, in fact, 0.3 recurring is slightly more than this lower value and slightly less than this value, lies in between them actually. Okay. So we shall not, obviously, I mean, this is too complicated over there. But what we can do, for example, is we can take up simpler view. There's also another aspect of this integral. Right now, what we are defining, what we're dealing with is something called a definite integral. This area computation, this area calculation is in fact referred to as a definite integration. It will give a number. Definite integration. ये एक number provide करता है, single number, है ना? But एक दूसरा approach ये है कि we go back and if you remember we talked about derivatives, isn't it? So derivatives थे function के, they were transforming the function in some way. For example, if I differentiate t square with respect to t, I end up getting 2 times t, twice t. So some transformation. So ये जो operation है to take up the derivative, we would actually take the inverse operation. Inverse operation जो होता है उसको वैसे तो एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, but एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं होता. You can actually construct in this case an inverse operation by simply following the, you see that you can, since if I just differentiate dt by t square, this result is known to be twice t. So we say in this case that therefore 2t is an antiderivative of t square. Oh, sorry, there's a mistake. Sorry, and this is a derivative, by the way. It's a derivative of t square, and correspondingly, is equivalent to saying that or t square is an antiderivative, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा ऑपरेशन of 2, right? But the problem is that the antiderivative is not unique actually. In fact, you notice करते हैं कि अगर also d by dt of, if I do t square plus 2, now t square
This will be same thing as d by dt of t square plus d by dt of 2. The right part is 0 because it's a constant. So I actually end up getting d by dt of t square, which is nothing but 2t. इसका मतलब ये हुआ कि t square plus 2 is also an antiderivative of 2t, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2t मिल रहा है, इसलिए 2t का एंटीडेरिवेटिव t स्क्वायर प्लस 2 भी है. ओके, तो पॉइंट ये है कि एंटीडेरिवेटिव जो है यूनिक नहीं होते हैं. इनफैक्ट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ऑफ देम. t स्क्वायर प्लस 2 ही क्यों, t स्क्वायर प्लस 3, t स्क्वायर प्लस 0.5, t स्क्वायर प्लस 5, t स्क्वायर प्लस whatever constant number I can take, I'll always get up 2t over there, right? तो ये जो एंटी डेरिवेटिव है वो यूनिक नहीं होता इफेक्टिवली. बट इफ आई कलेक्ट ऑल द एंटी डेरिवेटिव्स उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. तो बेसिकली द कलेक्शन ऑफ, इफ आई जस्ट कलेक्ट ऑल द एंटी डेरिवेटिव, अगेन डेफिनेशन हमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता. What we are interested more in is the process actually. But just for sake of completion, let me write it down. The collection of all antiderivatives is called the indefinite integration. Indefinite integral. So ये actually एक function होता है already. So basically the idea is that if I differentiate d by dt of capital Ft, for example, is equal to small ft, then so small ft is the derivative of capital F2. Therefore, the indefinite integral तो यहाँ पे इसमें बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप है डेरिवेटिव के साथ. Ft is going to be capital Ft plus a constant. Constant क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर मैं not only differentiate capital Ft but also capital Ft plus some constant, then we're still giving a small ft because derivative of constant is 0. तो इस कारण से उस बात के लिए हम लोग constant को हमेशा लिखते हैं, and it's written down as integral ft dt equal to capital F2 plus. इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर हम लोग राइट वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेंड मिलना चाहिए बेसिकली. As remember, this part is the integrand actually. So if I differentiate the integral, then I should get the integrand. That's the idea. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत एक क्लोज रिलेशन है डेरिवेटिव के साथ. इनफैक्ट we talked about a derivative earlier, and this is kind of an inverse operation. This c simply means यहाँ पे this is an indeterminate constant actually, or something like an undetermined constant, which implies that this could be any value but number, a pure number of it, right? तो अब इसका रिलेशन वो एरिया कैलकुलेशन से कैसे है एक्चुअली, हाउ इट इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ एरिया. but it's related in fact. The idea क्या है कि and this is in fact guaranteed by something called the fundamental theorem of integral calculus, and it turns out कि अगर हम लोग area compute करते हैं, which was actually, if you remember, notation was a to b f dt, या इसका मतलब हम लोग a से b तक under the graph of ft एरिया निकाल रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट.
this would be in fact nothing but capital F of B minus small f of capital F of B. ये F is this function, right? So idea इसको use करने से relatively simple हो जाती चीजें. I mean, area computation can be actually obtained by finding out the integral. Before any example, there will be only a couple of formula that I'm going to provide. In fact, the reason ये है कि बहुत सारे integrals हैं, अब सबको हम लोग लेंगे तो फिर कोई फायदा हमारे लिए है नहीं. What is important is that there are some, some standard function that we often encounter. हमारे in terms of physics over there, we won't encounter too many of them. In fact, very few. So in terms of those standard functions, we could make a small chart which gives us the integral rather indefinite integral actually of the integrand, and we can then use those formulas to compute the area, right? So the most fundamental result is definitely that of the power function that we have been doing, right? जो power form है, say t raised power n, we already know the derivative part. So right now we would also like to write on the antiderivative part. I'm going to just therefore write on a very small, a couple of formulas which will be useful for us. Remember that this is in no, I mean, it's definitely not exhaustive list. In fact, we can have an example. In this case, this table, I'm just, in fact, I'm in fact, let us say, I will just copy it from this. Okay. The difference that we have, I am in this case not giving in terms of, okay, P के terms में लिखते better होगा possibly. It will be less confusing over there. Okay, let me see. I will, instead of them, I'm writing down over here. I will write only a few of the results that are important, which will be often most encountered. Let's just a very brief list of integrals looking at. First thing you should notice is that if I look at the power form over there, indefinite integration of t raised power n into dt. The power form. This is known to be t raised power n plus 1. I actually don't bother exactly how these formulas are coming. बाद में कभी मौका मिलेगा देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ऑब्वियसली मैथ्स में तुम करोगे वैसे भी. अभी हमारे पास जो टास्क है that is just to see it being applied in problems of physics actually. That's what we have. तो ये फॉर्मूला है t raised power n का इंटीग्रेशन का. फॉर एग्जांपल t स्क्वायर का इंटीग्रल t raised power 3/3 हो जाएगा प्लस अ कांस्टेंट. वी ऑब्वियसली नीड टू मेक श्योर कि n यहाँ पे -1 नहीं, तो n अगर -1 होगा then we are dividing by 0, so it's undefined. But अगर n -1 होगा तो this is same thing as dt by t actually. dt by t जो है वो log में होता है ln of mod t. ln in this case represents the natural log, right? We already encountered this result earlier. So that is natural log that we have. इसके अलावा एक trigonometric formula, if we do have the exponential, which is a special case, but if we integrate the exponential, we actually end up getting the exponential itself. And we could consider some trigonometric, especially two of them. Sine t, the integral is actually minus cos t plus a constant. While अगर हम cosine को integrate करेंगे, तो the result होगा वो sine of t होगा. I think this brief list will be very enough for us, by the way, except for a couple of things. You can actually always form some of them by using derivative, because it's nothing but inverse of the derivative. We know, for example, that if I differentiate tan t, the result is sec square t, which implies I could actually write down this result as an integral. I could write down the integration of
sec square of t dt. This is nothing but tan t plus a constant. So this way I can form, table of integrals by the fine. It's like looking at a reciprocal relation for the derivatives. But I will not give all of them, or not give many of them by the way, because as time comes, as we keep on encountering more and more, I'll be just telling the result. I will send a list if you want. Now, just to show a few examples, if I consider, for example, there are a few more things by the way you should be considering over there. The first thing that you should keep in mind is this integral, very much like a derivative, is also a linear operator. Okay. Linearity implies what? It implies that if I multiply ft with a certain constant, I can actually pull that constant out. So it is same thing as this. And it also means linearity is that if I add ft plus g2 to different functions, if I try to first add them and find the integral, it is same thing as if you first find their individual integral, integration ft dt plus integration gt dt, and then you considered the sum. So these are going to be, this is the linearity of it, linear property of the integral section, right? और भी चीजें कुछ स्पेशल सिंपल चीजें ध्यान रखनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dt कर रहे हैं, it will be thought of as simply t raised power 0 into dt. That will be becoming, the result will become t raised power 0 plus 1 by 0 plus 1 plus a constant. But that is saying t plus. So it's just t actually. Idea. Another example, suppose I wanted to integrate, for instance, I wanted the integral t square minus 3t plus 5 into dt. So first of all, I notice कि हम पहले इसको break कर देते हैं अलग-अलग parts में by using the linear property over there. T square dt, constants को pull out कर सकते हैं. इस कारण से we get this plus 5 into integration of dt. I could write down t square के बदले t cube by 3. I'll write down the constant at the end by the सारे constant को इकट्ठा करके एक ही बार लिखा जाएगा end में. So this becomes t cube by 3 and minus 3 into t square by 2 plus 5 into t and a constant. Okay, that's how it works effectively. Not something which, let us see. I hope it won't be a problem if you look at the variables, different variables by the way. And variables मान लो अलग भी हैं, for instance. जैसे instead of t dt we have x dx. The result will be still the same. Only thing we have to replace t with x actually. Okay. Acha, let me show one special example of definite integral. Suppose करते हैं कि we need to evaluate a definite integration. Suppose करते हैं कि I want to find out integration of 1 to 8. 1 to 8 t raised power, let's say cube root. Let's work out the cube root of t into dt. So we consider this, for instance, and this is an example of a definite integral. So the idea will be to first obtain the indefinite one. As I said, if we go back and look at this result, which incidentally referred to as a fundamental theorem of integral calculus actually, I first of all obtain the indefinite integral, then use that
antiderivative to compute the value at the upper and lower end. So for example, in this case, if I see this formula is t raised for 1 by 3 basically is t raised power 1 by 3 dt. Now the result of the indefinite, Sir, huh? sir, is the answer 45 by 4? The answer should be, let us see what it works out to be. You're getting 45 by 4. Yes, sir. 3/4 of 16 minus 1. Yeah, that's correct. Yes, sir. 45 by 4. You can first work out the indefinite integral e raised for 1 by 3 dt. In this case, this is this formula we're going to utilize e raised for n dt1, this formula. So that will be e raised power 1 by 3 plus 1 upon 1 by 3 plus 1 plus a constant. That makes it 3 by 4 into e raised power 4 by 3 plus constant. There. Yeah. This is what we have. Now, what I can do is I use this particular capital F is our this function. So I use this and obtain the values of the upper and lower limit. Normally it is, we write down it in this fashion. I write down this one as 3 by 4, 3 raised power 4 upon 3, and I just put a vertical line, plug the upper and lower values like this. This indicates that you're interested in finding out the values at the upper and lower limit and then subtract. So I get 3 by 4 into 8 raised power 4 by 3 minus 3 by 4 into 1 raised power 4 by 3. Okay. And this is not very difficult to compute. 3 by 4 common. 8 is nothing but 2 raised power 3. Use the properties of indices. And this is just 1. So I get 3 by 4 into 2 raised power 4 minus 1. But that is 3 by 4 into 15. That is 45 by 4. So 45 by 4 is the required answer actually, right? This is how we compute the definite integration from the corresponding indefinite one. Point is that, well, it will be taking a while. Let me just send a few problems. I will just share this PDF later on, okay? And meanwhile, let me. Is this correct so far? Is okay to everyone? अभी तक सब ठीक है सबके लिए? बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा? थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि डेरिवेटिव हम डेरिवेटिव जो होता है वो एक्चुअली एक बहुत ही मतलब ऐसा है कि एक रेसिपी प्रोवाइडेड है, तुम वो ऐसा करते रहो, यू गेट इट। तो इंटीग्रेशन में कभी कभी, अभी तो खैर सब सब ठीक है, बेसिकली वी सिंपलर राइट नाउ, बट समटाइम्स यू विल हैव टू यू नो work out, it requires a bit of thinking sometimes, at least not very important for us. Let me just write down a few integrals that we will be trying, you will be trying actually as a homework. I will share this PDF after the class, and therefore I'm just writing these evaluations. They are not very difficult, will be done quite quickly in fact, but just to make sure that you have something to work out. I'll also send you know an assignment for instead of x I'll just take t cube minus p. For the case of motion in one dimension, because we already have done the case of uniform acceleration, so it's not a much trouble. I 6 dt 4 5 minus dt plus dt 5 dt
Import on 0.1. But I said the variable should not bother much actually. Let us say we just take a different variable instead of t. I'll just put x. It should not be much trouble because just the name has been changed actually. This should be rather straightforward. In any case, the definite integration will give us a number instead of whatever I consider actually. 0 to 1 x raised by 5, then 1 to 2, 3 by t raised by 4 dt, 7 I consider 5 to 2 pi cos of theta d theta. With respect to what variable you're integrating is indicated by d something, so that will give us the idea actually. Five plus y 10 pi by x squared t into dt. 11 we have 1 to 2 1 plus I whole square, then 12 minus 1 to 1 e raised power u du. I'm changing the variables every now and then. Then we could have 1 to 9 dx 2x 14 could consider 1 to 2 plus u square is 2 and 15 0 to 1 2 plus x with x into dx. This should be a bit of practice for time being. Sir, for the limits of pi, do we need to put the value of 22/7 and then evaluate? Oh, no. Okay, in this case, you remember the radian measure of angles? Oh, with radians, yes, I can. Actually, in this case, you need not put 2 pi, pi as 22/7. It turns out that cosine or sine should look in terms of degree. For example, sine pi by 3. Pi by 3 stands for 60 degrees actually. Are you getting what I'm saying? Sine pi by 3 is there for root 3 by 2 because that's sine 60 degrees. In that sense, it is being used. Yes, understood. Right. Okay, so I will just send this document. This basically today is May. Today date is what, by the way? It is 13th. If you want, so that will be, we can just finish for today, by the way. Anything else you have to ask anybody? Somebody has to ask anything? No? Today, whatever did was clear to everyone. We have gone from derivative to integrals. We've introduced the idea of getting from the position to the acceleration, then from the acceleration to the position.
Okay, we just have got, basically we have learned how to go both ways. So as far as I'm concerned, except for doing some problems in motion in one dimension, otherwise theoretically we have done mostly everything. And meanwhile has brought in the idea of the derivative integral both, in fact. So I think it should be fine enough. You know, if there's nothing to ask, then I think that will be all for today, by the way. Good evening to all of you, and in next class we shall definitely have the offline over there. Fine. Bye, sir. So bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. Bye to all of you. Ajati and Ashiki, that will be all, right?